Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine. Today again you are here with me Deepika, your science teacher. Today we are going to move ahead with our next chapter. Actually till now we have discussed our 4 chapters in detail. We discussed also worksheet with them. So all the things regarding these 4 chapters is completed from my side. Now your work is left to learn the chapter and give the test of the same chapter to your parents. As the tests are not going on in our school. Yes beta, I told you in my one of the previous video that our PT1 is about to come, but actually it was my mistake. These PT1 are started from 6th to 12th class. It is not for 5th class, so your PT1 is not going to come. So you have to learn your chapter and do the practice of the chapter by your own only. Because we don't want to pressurize you, you are small kids, so just keep learning and writing the answers in the form of the test, in the form of the worksheet you can write. So yes beta, now move ahead with our next chapter, with our next syllabus part, that is chapter 5, rocks and minerals. So in this chapter we are going to discuss about different kinds of rocks and the minerals by which the rocks are made up of. So first of all we are start with rocks. What do you mean by rocks? Yes, rocks are the solid substances which is present around the earth. Earth is also made up of rocks. So yes, rocks are the building blocks of our earth. ये हमारी earth को बनाते हैं. And when we are using magnifying glass is the glass which is used to enhance the picture of anything. वो किसी भी चीज को बड़ा कर सकता है. So when we are observing these rocks with the magnifying glass, we can see that these rocks are made up of fine grains. हम उनको बोलते हैं grains. Fine grains. These can be of any shape. These can be of circular shape. These can be of triangular shape, rectangular shape, square shape. Any kind of shape they can be present up. So yes, these are the grains by which rocks are made up of, and these grains are known as minerals. इन्हें हम minerals बोलते हैं. And sometimes a particular type of rock is made up of a single type of mineral, and sometimes it is made up of more than one kind of mineral. So yes, it depends upon different rocks. Now move on to our next topic, that is types of rocks. कि rocks are of how many types? On the basis of their formation, they are of 3 types: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Now I am going to repeat all this process in Hindi. हमारे पास जो हमारे आसपास के जितने भी substances हैं, hard surfaces हैं, वो rock से बने हुए हैं. हमारी earth भी rock से बनी हुई है. जो rocks है वो grain से बनी होती है. फाइन grains, छोटे grains मिलके एक बड़ी rock बनाते हैं. ये ग्रेन एक्चुअली होते क्या है? ये मिनरल्स होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि रॉक्स जो है वो मिनरल से बनी हुई है. कई बार ये जो रॉक है वो एक ही तरह के मिनरल से बनी होती है. कई बार ये रॉक है जो मोर देन एक तरह के मिनरल से बनी हुई होती है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स कितनी तरह की होती हैं? रॉक्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि वो कैसे बनी उस बेसिस पे वो 3 तरह की होती है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. हम एक एक करके इन तीनों रॉक्स को डिस्कस करेंगे, बट आज के वीडियो में हम इग्नियस रॉक्स को ही डिस्कस करेंगे. नाउ आवर फर्स्ट रॉक इज इग्नियस रॉक्स. इग्नियस, द वर्ड मीन्स फायर. इट इज मेड अप ऑफ समथिंग रिलेटेड विथ फायर. Actually this is our earth surface. As I told you, earth surface is made up of different rocks, and rocks are made up of different minerals. So it is a layer of rocks under the earth surface. This is the surface of the earth, and this is the inner view of the earth surface. So here we can say sometimes here it is present hot magma, या फिर हम इसको बोल सकते हैं hot molten rocks. hot गरम, molten मतलब पिघली हुई, rocks मतलब पत्थर. So inside the earth, because of the high temperature, hot molten rocks are present. So they are so hot, बहुत ही गर्म होती है, और उसकी वजह से कई बार इतना pressure inside the earth surface इतना ज्यादा हो जाता है कि they comes out in the form of the volcano.
So yes, you will. We are going to discuss one chapter regarding the volcano in our upcoming chapters. Volcano is like a conical structures which in which at the center one crater and vent is present, and this crater or vent actually is the opening from which this magma can come out on the surface of the earth. ये उसके surface पे आ सकता है, and yes, here it will spread out on the surface of the volcano. वो वोल्केनो के सरफेस पे बिखर जाता है, कूल्स डाउन हो जाता है, एंड देन इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स. तो ये गरम चीज से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको इग्नियस बोलते हैं. यहाँ पे क्या है, जो भी हाई प्रेशर की वजह से लावा थ्रोन आउट हो जाता है अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ, तो उसको हम लावा बिखर जाता है और वो ठंडा हो जाता है, जो इग्नियस रॉक्स बनाता है. ठीक है. Actually, magma and lava are the same thing, but the magma is the molten rock inside the earth surface and lava is same molten rock outside the earth surface. मैग्मा और लावा जो है वो बिल्कुल सेम चीज है, बस मैग्मा जब तक वो अर्थ के अंदर होता है हम उसे तब तक बोलते हैं, और लावा जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, अर्थ के बाहर आ जाता है, हम उसको बोलते हैं. सो बेसिकली इग्नियस रॉक्स आर मेड बाय दिस प्रोसीजर. So yes, our next topic is types of igneous rocks. So yes, igneous rocks are basically made up of by cooling of the magma, or we can say by cooling down of the lava. When it is inside in the earth surface, then it is known as magma. When it comes out of the earth surface, then it is known as lava. So yes, on the basis of that, on the basis of cooling of the lava, it is of 4 types: basalt, granite, pumic, and obsidian. So one by one we are going to discuss all 4. First one is basalt. Basalt is also known as scoria rocks. Okay, these are 2 names of the same rocks, basalt and scoria rocks. Okay, now how it is formed? It is formed by the rapid cooling of lava. Lava, when it comes out on the surface of the earth, when it cools down very fast, then it forms the basalt rock. Basically, it is dense and dark in color. It is very dense and dark in color. As you can see in your book also, it is present. It is very dark appearance. It is having very dark appearance. And it is having fine grains. As I told you, the rocks are made up of the grains, fine grains. It can be of any shape. So yes, these are made up of very fine grains, means very small grains. Small minerals it is made up of, and it is having the sharp edges. So this is about the basalt rocks. Now our next rock is granite rocks. Granite rocks are most commonly found on the earth surface. They are formed by the magma when the magma cools below the earth surface. Yes, here one question can arise in your mind. Here we are talking about the lava, but here we are talking about the magma. Yes, beta, both are the same things, but it is the rapid cooling of the lava means on the surface of the earth. But here magma do not reach the earth surface. It cools down just inside the earth surface. That's why we are calling it as a magma. So it cools below the earth surface, and it is made up of 3 minerals named as quartz, feldspar, and mica. Okay, so yes, it can be found in many colors like black, grey, white, and pink. So it can be found in many colors. So it can be used in flooring, making statues, and making roads or paving roads, we can say, because of its hard texture. It is very hard because of presence of this feldspar mineral. So that's why it can be used to make the floors of our house. It can be used to make the statues because they are again very hard in nature, and it can also used to make the roads because they are again very hard. Next one is pumic. Pumic is found in different colors like light, grey, and cream color. Okay, they are formed by the cooling of frothy lava. Frothy means having bubbles inside. Okay, so it is made up of frothy lava, means having bubbles inside. So its structure is like this. These were the bubbles. Initially bubbles are made up of the air, but when the rock solidifies, then the air gaps contains the air. Now bubbles are not present, but only air gaps are present.
So these air gaps are having air inside it, which makes it light in weight. So that's why, because of its light in weight, it can float on the surface of the water, and it is the only igneous rocks which can float on the surface of water. And it can be used to scrub our body, it can be remove our dead skin from the body, and it can also used to remove the outer or dark skin from the body. And it can also used by the dentist to whitening our teeth. So yes, pumic stone may be present at your home also. Pumic stone is made up of these pumic rocks. Okay. Now next one and the last one type of rocks, igneous rocks, is obsidian rocks. Obsidian rock again is made up of the quick cooling of the lava. Here also rapid cooling of the lava, here also quick cooling of the lava, but their appearance are different. It is dense and dark in color, and it is having glassy appearance. Okay, it is black and dark in color, and it is having sharp edges. That's why it can use to cut the jewelry. Okay, so this is about the obsidian rock. Now I am repeating whole process again in Hindi. इग्नियस रॉक्स 4 तरह की होती है. पहले वाली बेसाल्ट होती है, जिसको हम स्कोरिया रॉक्स भी बोलते हैं. ये बहुत जल्दी कूलिंग होने की वजह से लावा की तब बनती है. ये डेंस यानी कि बहुत ही कंबाइंड स्टेट में होते हैं इसके अंदर मिनरल्स, और डार्क कलर की होती है. इसके जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, और इसके शार्प एजेस होते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट सबसे ज्यादा मिलने वाला रॉक है हमारे अर्थ के सरफेस पे. ये मैग्मा के कूल होने की वजह से बना है. मैग्मा हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर ही ये ठंडा हो जाता है, तब ये बना है. ये 3 मिनरल्स का बना है, क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और माइका. और जो ये होता है ये अलग अलग कलर्स में हमें मिल सकता है, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट एंड पिंक. इसके अंदर जो फेल्ड्स्पार होता है ये इसको हार्ड बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम इसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं. लाइक फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं, स्टैचू बनाने में और रोड्स को बनाने में. नेक्स्ट आता है प्यूमिक. प्यूमिक हमारा लाइट ग्रे और क्रीम कलर का होता है, और ये कूलिंग ऑफ फ्रोथी लावा के ठंडे होने से बना होता है. फ्रोथी मतलब हैविंग बबल्स. उसके अंदर बहुत सारे एयर बबल्स हैं जिनके फूटने से एयर बाहर निकल जाएगी. तो लेकिन वो तो अभी एयर बाहर निकल ही नहीं पाई, पहले ही ये ठंडा हो गया. दैट्स वाई इसके अंदर एयर गैप्स होते हैं जो इसको लाइट वेट का बनाते हैं, जिसकी वजह से पानी में तैर पाता है. ठीक है, तो ये प्यूमिक स्टोन आपके घरों में भी मिलता है, अलग अलग शेप्स में मिलता है, अलग अलग कंपनीज का आता है. ये स्क्रबिंग में यूज करने में काम आता है. स्क्रबिंग मतलब हमारी डेड स्किन को रिमूव करने में, और ये डेंटिस्ट भी यूज करते हैं हमारे दांतों को व्हाइट करने के अंदर. लास्ट वन है ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन हमारा क्विक कूलिंग से ही बना है लावा के, लेकिन इसका अपीयरेंस बेसाल्ट से थोड़ा अलग है. ये डार्क एंड डेंस दिखता था, लेकिन ये ग्लास की तरह दिखता है. ये ब्लैक और डार्क होता है. इसके एजेस मतलब कॉर्नर्स जो होते हैं, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ज्वेलरी को कट करने में यूज करते हैं. सो बेटा, this is all about our igneous rocks, and this is all about our today's lecture. Now I am going to show you one video regarding the igneous rocks. Enjoy the video and clear your concept more. So thank you.